112. Yes. Lord, this is an application for quashing of the first information report and the consequential orders, Lord, under section for issuance of NBW as also 82 by the police. This is a gross case of high-handedness by the police, my lord, and appears to be in collusion, my lord. Now, my lord, I straight away invite my lord's attention to page 23, my lords. The first information report. My lord, the informant is my younger brother, my lord, own full brother. Page. Sorry? Page. Page 23, my lords. If your lordship will come to the narration that starts from page 26, my lord, type copy is there. Yes. Lordship. Now, my lords, lordship will just permit me to place, my lord. सविनय निवेदन है कि सुभाष कुमार सिंघानिया उम्र 65 वर्ष, करीब पिता स्वर्गीय महावीर प्रसाद सिंघानिया बिल्डिंग खलीफाबाद चौक कोतवाली भागलपुर का निवासी हूँ। मेरी संपत्ति जो मौजा महेशपुर मोहल्ला अलीगंज थाना जगदीशपुर जिला भागलपुर खाता 887 खेसरा सो इतना हेक्टेयर जमीन है जो शिव भगवान मोहनलाल हार्डवेयर के नाम से है, जिसका मैं सुभाष कुमार सिंघानिया एचयूएफ एकमात्र मालिक हूँ, जिसका कर्ता सुभाष कुमार सिंघानिया है। जिस जमीन का फर्जी बंटवारा नामा नॉन जुडिशियल स्टाम्प संख्या इतना 21/12/18 पर विनय कुमार सिंघानिया, आई एम विनय कुमार सिंघानिया, मेरा पिटिशन नंबर 1, और इनकी सिस्टर है हुजूर सुमित्रा देवी, दे आर दी पिटिशनर बिफोर योर लॉर्डशिप, एवं अन्य द्वारा बनाया गया, जिसमें विनय कुमार सिंघानिया ने अपने हस्ताक्षर के बाद मेरा फर्जी जाली हस्ताक्षर बना दिया। वो अपने लिखावट में ही दिनांक 23/12/18 को अपने हस्ताक्षर के नीचे तथा मेरे फर्जी हस्ताक्षर के नीचे लिख दिया। उस फर्जी बंटवारनामे की जानकारी मुझे सूचना अधिकार से प्राप्त कागजातों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि मेरे फर्जी हस्ताक्षर से विनय कुमार सिंघानिया ने जगदीशपुर अंचल में म्यूटेशन हेतु आवेदन देकर उक्त जमीन का म्यूटेशन सुमित्रा देवी सिंघानिया उर्फ बजाज के नाम करा लिया। उक्त फर्जी म्यूटेशन एवं बंटवारनामा के बाद एक दान पत्र सुमित्रा देवी सिंघानिया और बजाज ने विनय कुमार सिंघानिया को दिनांक 21/5/20 को दस्तावेज संख्या 100 में भागलपुर जिला निबंधक में निबंधित कराया, जिस दान पत्र के पारा 3 में स्पष्ट उल्लेखित है कि उक्त जायदाद का मौखिक बंटवारा हम भाई बहन के बीच आपस में कुछ समय पूर्व हो गया है। अब पंजीकृत दान पत्र संख्या 100 से मौखिक बंटवारा का उल्लेख किया है, तो इन्हीं व्यक्तियों द्वारा 2 वर्ष पूर्व का बंटवारनामा दिनांक 23/12/18 को दर्शाकर म्यूटेशन कराया गया है। एक ही व्यक्ति द्वारा 2 प्रकार की बातें यह स्पष्ट इंगित करता है कि पूर्व में किसी भी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं हुआ, सिर्फ जमीन हड़पने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत जगदीशपुर अंचल को मेल में लेकर कराना, लॉकडाउन अवधि में चुपचाप कोविड के दौरान जाली दस्तावेज कराकर म्यूटेशन के साथ साथ दान पत्र करा लिया। उसी कोरोना काल में उसी दिन एक लीज डीड बजरिए निबंधन दस्तावेज को अनूप कुमार सिंघानिया, राजेश कुमार सिंघानिया, दोनों पिता विनय कुमार सिंघानिया के नाम से 10 वर्षों के लिए करा दिया, जो पूर्ण रूप से तथ्य को छिपाकर एवं षड्यंत्र अथवादी कार्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरी संपत्ति का बिना मेरी जानकारी व मेरे फर्जी हस्ताक्षर से बनाया गया बंटवारनामा सहित अन्य षड्यंत्र व जालसाजी धोखाधड़ी कर गलत दस्तावेज तैयार किया गया यथा सही तथ्यों को फर्जी एवं तथ्य जालसाजी कर कागजात बनाने वाले विनय कुमार सिंघानिया, दूसरा राजेश कुमार सिंघानिया, अनूप कुमार सिंघानिया, तीनों साकिन सो, चौथा सुमित्रा देवी सिंघानिया और बजाज पति रामकरण बजाज सो झारखंड रांची, संजय कुमार अग्रवाल, श्याम सुंदर पनिहार, राजेश सहाय सो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। नाउ माय लॉर्ड, स्ट्रेट अवे माय लॉर्ड, आई इनवाइट माय लॉर्ड्स अटेंशन, my lord, on the face of it, my lord, it is contradictory to, my lord, page 124, my lord, annexure 4. Now, my lord, this Shiv Bhagwan Mohanlal, Yes, is a partnership firm, my lord, and my lord, he had been in doing it, my lord, this younger brother of mine had been doing it repeatedly, my lord, and there is a finding recorded by an honorable judge of this honorable court in arbitration proceeding that he has been swindling money from that firm, my lord. Now, my lord, kindly see, now he is talking that ये शिव भगवान मोहनलाल हार्डवेयर के नाम से है, इसके हम मालिक हैं, हम करता है. This is what in the FIR he has stated. Now kindly come to page 124, my lord.
Now, my lord, this is arbitration number 4 pursuant to section 11(6) petition before this honorable court. Yes. Honorable Justice, as he then was, Honorable Justice Uday Sinha was appointed as an arbitrator, and his lordship held the arbitration proceeding, and your lordship will kindly come to page 125. Yes. Learned counsel for the claimant placed reliance upon exhibit 1, my lord, in the middle, my lord, if your lordship will see. Yes. Third paragraph. In reply to the RTI, in answer to the query by the claimant, by this reply, RTI reported that Shiv Bhagwan Mohanlal Hardware was a registered firm since 1949. Then, my lord, your lordship will see, learned counsel for the claimant also placed reliance upon a written statement filed by registrar of firms in title suit number 792 of 13, wherein plaintiff Mr. Subhas Kumar Singhania, my lord, he has filed a title suit also, which is still pending, my lord. Subhas Kumar Singhania has challenged the procedure and validity of registration with the registrar of firms. The stand of registrar of firm was that the firm has been registered as a partnership since 1981, and in the situation there was no occasion for Subhas Kumar Singhania to question the registration in 2013. In my view, there is plenty of evidence showing that the Shiv Bhagwan Mohanlal Hardware was a registered firm as partnership. And then, my lords will kindly see, my lord, this is learned counsel for the respondent, yani my lord, informant Subhas Singhania. He made certain assertion of respondent that the firm being HUF firm was approved by the income tax proceeding in 2008-9 at page 227 is a partnership. The name of both the brothers have been mentioned in the assessment, and the word HUF have been mentioned against so and so. From these facts, he submitted that there was ample proof to show that the firm was HUF and not a partnership. The submission is untenable. Both the brothers had their own separate HUF, and for that reason they have described as HUF in the assessment proceeding. So, what has happened in this? Now, my lord, interim award was passed, my lord, at page 130, my lords. First page 130, my lords. Second paragraph. There is evidence galore indicating that the I have read that. Your lordships. Now, my lord, what has been happening? That, my lord, this gentleman, actually now he is not staying in Bhagalpur. Now he has settled in Calcutta, my lord. Now there are properties here in which he has 1/3 share. Now he has entered into a development agreement with a developer. Now he wants that the 1/3 share of the sister should also be given to the developer, my lord. And therefore he is creating all sort of things, my lord. Now, my lord, this is not the FIR. There is another FIR which was lodged against me for the same with the same, my lord, pleadings in the FIR with respect to another plot in which we are residing there, my lord. Now, my lord, if in that case, my lord, we had to again, my lord, they are in league of the police, and we have to approach this honorable court for anticipatory bail. My lord, unfortunately, the learned district judges or additional district judges, they do not apply their mind about this, and every time mechanically they reject it. Now, my lord, when we came before this honorable court and it was brought to the notice of this honorable, kindly see. Don't make a general statement. No, my lord, it's not a general statement. What we are experiencing, This that is case what I am what submitting happened, before your lordship. different thing. No, my lord, I don't know what is the message to them or what is their understanding, that in most of the cases, my lord, they just simply think that if they reject it, that will be the best way out for them. And this is how, my lord, this honorable court is flooded with bail applications, my lord. My lord, this is also the comment of the Supreme Court, that Patna High Court is flooded with cases. Of course, my lord, half of the cases are liquor, but then, and kindly see, my lord, again, here also, similar nature, similar manner, FIR was lodged with respect to the property, my lord, and this was with our house in which we are residing there. And this honorable court, the matter was brought to the notice that the property finds reference in the partition suit. I have understood that the dispute is between the two brothers. Completely civil nature, my lord. Absolutely no question of any. So you have come for quashing of the FIR. Your lordships, I have come for that, my lord. And in the meantime, what has happened? That, my lord, when this case anticipatory bail was granted, then suddenly police became active in this case, present case, my lord. And not only that, it applied for obtained warrant of arrest. My lord, this is, my lord, 80-year-old person, and thereafter immediately 82 has been taken against him. And now the police came Where to is our that residence. order? My lord, that order we have filed through, my lord, IEA, my lord, hard copy. I am from. Yes, I was looking for that one. Your lordship, kindly see. Because in the beginning you said Yes. 82, so I was looking Yes, for my that. lord, kindly see. Where is that? My lord, if your lordship will see page 18, my lord, 82 Yes. order. कैसे फोन नंबर कैसे है तो 100
एंटिसिपेटरी बेल हुजूर फाइल किए हुए हैं, वहां पर पिटीशन फाइल किया गया, उनको बताया गया कि हमारा एंटिसिपेटरी बेल यहाँ पर पेंडिंग है अभी, और उसके बावजूद इन्होंने जो है रिजेक्ट करके हमारे पिटीशन को और ये ऑर्डर पास कर दिया। और दिस इज देयर इज माय लॉर्ड्स जजमेंट दैट व्हेन एंटिसिपेटरी बेल इज पेंडिंग there should not be, and that has been affirmed by the Supreme Court, my lord. Today, my lord, I saw in the live law, my lord, same view has been taken a judge of the Allahabad High Court, that even though anticipatory bail, when the anticipatory bail is pending and 82 has been issued, anticipatory bail, it will not bar for anticipatory bail. Yes, state Your Lordship. is making out a prima facie case. How 82 process is being issued in a routine and mechanical manner? Your Lordship, today I have. These are drastic powers vested with the court. And you please read 82s. You have section 82 in your hand. Please read. Says there are certain mandatory requirements. Unless those requirements are fulfilled, निकालिए CRP. There cannot be a process under section 82. And one of the judgments which I have referred in that recent judgment, that judgment is of Those judgment, Lavesh, 2020. that Lavesh judgment. No, और justice 2020 देखिए उसमें एक BLJ होगा रेफर्ड, 2020 का एक BLJ का हमारा जजमेंट रेफर्ड होगा, उसमें 82 का ही ऑर्डर चैलेंज हुआ था. In your lordship's judgment. Yes. And your lordship have referred about 20. And in that case, क्या नाम है हुजूर का, कुछ याद है? देखिए ना आप, वो जो ऑर्डर आप अभी बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से अफर्म हुआ है, अच्छा अच्छा, आप वो जजमेंट में देखिए, उसमें रेफर्ड है वो. आपका वाला जो, हाँ, वो हुजूर नहीं लाई है. नहीं आपका है वाला जजमेंट नहीं लाई है. उसमें 82 को हमने डिटेल में डिस्कस हमने एक किया. कंपाइलेशन बनाया है, होगा तो हुजूर को एक कॉपी दे देंगे, उसमें आपका भी जजमेंट है. 82 पढ़िए. J. If a court has reason to believe, whether after taking evidence or not. देखिए पहला वर्ड जिसको मार्क कीजिए, रीजन टू बिलीव. Reason to believe. रीजन टू बिलीव जो वर्ड है, J. that indicates that there must be some material. Material. It's not a mere suspicion that will do. Your Lordship. Reason to believe. Believe. उसके बाद पढ़िए. Whether after taking evidence or not, that any person against whom a warrant has been issued by its has absconded or is cancelled. So, if the court has reason to believe J. that a person against whom warrant of arrest has been Issued and has absconded. absconded. J. Yes. Now, how can you form this belief J. when that person is before a court of law seeking anticipatory bail? That is the basic question. And this is how the police atrocities are taking place. On the one hand, we are not able to take up the anticipatory bail applications, and at the same time, the accused is shown absconder. पुलिस वाले क्या लिखते हैं, एक लाइन लिखते हैं, एकदम रेटोरिक है लिखा हुआ, संपत्ति हटाने का प्रयास कर जो रहे है वो हैं, संपत्ति हटाने का प्रयास कर रहे हैं, भाग रहे हैं. वो कहीं नहीं भाग रहे हैं, लेकिन वो एक मेंशन कर. वही मेंशन करते हैं. एंड द कोर्ट इज पासिंग ऑर्डर. सेकंड देखिए क्या है, Or is concealing himself so that such warrant cannot be executed. concealing himself, showing that so that the warrant Or cannot be executed. कभी आपके आईओ ने कभी नोटिस दिया इनको कि जरा आइए आप इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन? नो नोटिस अंडर 41A स्पेसिफिक कोई नहीं देता है, कभी नहीं देता है, कभी डायरी में भी नहीं लिखेगा. Today itself in the courtroom at 2:30, Your Lordship, I have received a IA, Your Lordship. So, Your Lordship, I have. No, I'll give you time. Your Lordship, I have to take I'll give instruction. you time. You seek instruction. Your Lordship, I have to. I'm not passing final order on Your this. Lordship, Your Lordship. Only thing is that in the meantime, you don't execute this 82. I'm not staying the warrant. जी जी. I will not stay the warrant, but I will stay this 82. As No, my lord, your lordship may direct no coercive steps be taken against her. Pursuant to this order. Sorry? Pursuant to this order,
Since your lordship, हाँ, no coercive steps. the prayer is for- वारंट इज ऑल्सो इशूड ना, साइमल्टेनियसली है क्या? 10 दिन के अंदर अंदर। योर लॉर्डशिप देखिए ना, माय लॉर्ड विल काइंडली सी पेज 15 माय लॉर्ड ऑफ माय पिटीशन माय लॉर्ड्स। 14/6 को इस तरह के मैटर्स में क्या हो जाता है आपके पुलिस को, इतनी जल्दीबाजी? 14/6 को सिविल प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में भाई भाई लड़ रहे हैं, जी, इसमें इतनी जल्दीबाजी क्या हो जा रही है कि आप 15 दिन में वारंट के बाद कुर्की क्या जब्ती भी लेते हैं? अगर जो एलिगेशन है हुजूर कि फॉर्ज डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड हुआ, तो whatever the matter, he will face the trial. He will face the trial. But वारंट आपको इशू किया, from the plain reading of the FIR, there is a cognizable offense, your lordship, it appears, your lordship. Since your lordship, there is a specifically said that false document was created, and on that basis, the mutation has been done, and thereafter the deed were executed, your lordship. So from the very inception of the intention, your lordship shows there is some. so if anybody today lodges a complaint, you have submitted a forged LLB certificate in the bar council, and you have obtained a license to practice based on that forged certificate. Lordship. Will it require any investigation, Yeah. or you will simply be? Your lordship, it's required to be So investigated. he has made an allegation. Your lordship. The investigation is still going on. What I mean to say that in course of investigation, police should have called upon him. Police could have issued a notice. Lordship. 41A आज इतनी बार बात हो रही है यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, आप 41A को क्यों नहीं तवज्जो दे रहे हैं? Is it a heinous, is What it an actually offense happened, of? your lordship, I have to take ये it. कोई heinous offense का केस है? It is not a case of an heinous offense. तो आप क्यों नहीं नोटिस दे करके इनको बुला सकते थे? बनाना चाहिए। ये आपको बताते हैं अपनी बात। जी, इन्वेस्टिगेशन में थिंग्स वुड हैव बीन क्लियर। हाँ, वहाँ तो उनको पावर है। नाउ योर लॉर्डशिप विल सी एट पेज 15, 14/6/22 को वारंट लिए हैं ये लोग। 14/6/22 को वाद के अनुसंधानकर्ता द्वारा एक आवेदन पत्र के साथ बंद है, जिसकी छाया प्रति दाखिल करते हैं प्राथमिकी अभियुक्त विनय कुमार सिंघानिया, सुमित्रा सिंघानिया, राजेश सिंघानिया, अनूप सिंघानिया, संजय अग्रवाल सो के विरुद्ध वारंट निर्गत करने की कृपा की जाए। आवेदन पत्र स्वीकृत किया जाता है। किस तरह से माइंड का एप्लीकेशन है हुजूर, हमने बोला था तो हुजूर ने कहा था कि जनरल एलिगेशन, ये लोग ये सब जो है सो हुजूर कोर्ट में कौन लिख के साइन करा लेता है, योर लॉर्डशिप विल हैव टू कंसीडर दिस। और दूसरा देखा जाए उसके बाद हुजूर हम लोगों ने वकालतनामा के साथ दाखिल किया है। विनय कुमार सिंघानिया सो के तरफ से एक आवेदन पत्र दाखिल किया गया है। इस बात के अनुसंधानकर्ता द्वारा एक आवेदन पत्र दाखिल किया गया है, विरुद्ध निर्गत वारंट की अस्पष्ट निर्गत करने की प्रार्थना करते हैं। उसके बाद हमने फिर पिटीशन जो दिया था उस पर सुनवाई हुई है कि हमने कहा है कि हम एंटिसिपेटरी बेल में है। देखा जाए हुजूर वो पेज 18 पर आया जाए। हाँ, 27/6 को ही फाइल कर दिया 82 के लिए। हाँ, और हमने जो है ये पिटीशन दिया वहां पर कि डोंट डू दिस, वी आर सीकिंग आवर रेमेडी अंडर एंटिसिपेटरी बेल। और दूसरा केस का हमने बताया कि हाई कोर्ट में मैटर गया था, जिसमें हाई कोर्ट ने देखा कि बड़ा सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लगता है आपको कि एक तरफ एंटिसिपेटरी बेल के लिए एक्यूज दौड़ रहे हैं, दे हैव अ रेमेडी इन लॉ, और वो परेशान है कि हमारा केस टेकअप हो जाए, टेकअप नहीं हो पा रहा है, ये हो रहा है। और दूसरी तरफ आप उसको एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर करके कुर्की जब्ती करने चले जाते हैं। यहाँ फिर एंटिसिपेटरी नहीं मिलता कि न्याय तो मिलनी चाहिए उसको ना, जी जी, न्याय तो मिलनी चाहिए। फिर वो जब जेल चला जाता है तो उसके बाद 6 महीना उसका बेल एप्लीकेशन टेकअप नहीं होगा। अब फिर प्रोसेस इशू हो जाता है, एंटिसिपेटरी फिर पार्ट हो जाता है। जी, नहीं, वो तो उस जजमेंट में हमने डील कर दिया। उसके बावजूद भी हुजूर हुजूर अभी भी नहीं, यहाँ भी जो है जहाँ आता है कि अच्छा 82 नो रिजेक्टेड, अभी भी यहाँ भी है। देखिए उस जजमेंट में ये आर्गुमेंट मेरे यहाँ तो बहुत वेमेंटली हुआ था। देयर वाज वन ऑप्शन टू मी कि इमीडिएटली आई वुड हैव, हम एब्जॉल्व कर लेते अपने आप को कि चलो 82 स्टार्ट हो गया है तो रिजेक्ट करके काम खत्म करो। बट आई टुक इट कि नहीं, इस इशू को देखना चाहिए। And that has been therefore, my lord, it was such a reasoned order that when it went to Supreme Court, the SLP was dismissed. Was 4 judgments of the Honorable Supreme Court were cited at the bar Yes. in a position. आपको रेयरली ऐसा मिलेगा जब इन्फॉर्मेंट 4 जजमेंट्स लेकर के आवे अपोज करने के लिए। जी जी, The petitioner had not come with any judgment.
It was my lord's research, my lord. ये है हुजूर, ये जिस जजमेंट में है। उसमें हमारा 2 रिसर्च है। जी है। Learned counsel submit that these petitioners have been declared absconder during the pendency of the present application before this honorable court. Therefore, in view of the judgment of the honorable Supreme Court in Lavesh versus State of Delhi 2012 8 SCC in case of State of Madhya Pradesh versus Pradeep Sharma reported in 2000 so and so, Jarsindhu Chaube versus Amresh Chaube alias so and so reported in 2012 12 SCC, and one of the honorable Jharkhand judgment in Saddam Hussain versus so and so, the anticipatory bail application is fit to be rejected. एकदम सही कहा गया कि बहुत vehemently अपोज किया गया था। आप देखिए कितना vehemently अपोज हुआ कि मैटर वेंट टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। यस, इन्फॉर्मेंट वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद फिर लास्ट में हुजूर ने लिखाया है कि ये रिलाइड ऑन अ केस, रिसेंट केस प्रेम शंकर प्रसाद, 5वां जजमेंट है ये, बट इन स्पाइट ऑफ दैट अभी भी योर लॉर्डशिप कंसीडर्ड इट। थोड़ा और अभी कोर्ट में दिक्कत हो रही है। नहीं जो हो, आई एम नॉट ऑन दैट, आई एम ओनली सेइंग दैट आई हैव। हाँ, वो बीएलजे वाला है जो 2020 टू बीएलजे 507 अनिल पासवान, वो लिखाइए, उसमें हमने स्पेसिफिकली 2020 वॉल्यूम 2 बीएलजे 507 अनिल पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 507। In this case, this 82 issue has been specifically अनिल कुमार discussed. पासवान। And then my lords in the last said that learned counsel submitted that it is well settled that law bends before justice, and further it has been held in the case of Bharat Petroleum Corporation। ये versus- जजमेंट मैं याद रखता हूँ थोड़ा हमेशा। This I had introduced. ये अलग बात है कि हुजूर ने इसको पिटिशनर के मुंह से कहवा दिया है। वो तो देखिए, that is the art of writing the judgment. एग्जैक्टली। और जो भी हुआ उसमें ओपन कोर्ट में हुआ। ऐसा नहीं होता क्या कि आप कोई जजमेंट लेकर नहीं आए हैं, मुझे मालूम है तो मैं आपको दे देता हूँ कि जरा देखिए ये जजमेंट। देते हैं तो वही हमने किया उसमें, एकदम बिल्कुल। एंड उसमें बहुत बढ़िया कहा है ये सुप्रीम कोर्ट ने। दिस इज अ जजमेंट ऑफ आई थिंक मोर देन 20 पेजेस। यस, 21 पेजेस। 18 पेजेज आई डिक्टेटेड दैट वन मैटर हैड टेकन 1.25 घंटा मैंने अकेला किया था उसको। जी, बहुत लंबा जजमेंट है। इट वाज डिक्टेटेड इन ओपन कोर्ट। अच्छा, ओपन कोर्ट। यस, हाँ, ये क्रिमिनल मिसलेनियस। इट वाज डिक्टेटेड इन ओपन कोर्ट। लेकिन वही है, कभी कभी जो कहते हैं ना कि बहुत समय लग गया। हुजूर ऐसा है, यही तो अभी आपने बोला है कि जस्टिस बिफोर जस्टिस एवरीथिंग हैज टू बेंड। तब न्याय ऐसे थोड़ी होता है। It was a case of 304B in which I had granted anticipatory bail to the father-in-law and mother-in-law after dealing with all these submissions. Anticipatory bail. And fortunately, this judgment has sustained the Yes. test. नहीं, हमको लगता है कि हुजूर का This judgment, most of the judgments have sustained. I haven't seen any judgment except there are some stay, like वो जो महेश्वर सिंह वाला था, वो stay है सुप्रीम कोर्ट से, वो अलग बात है, but otherwise the judgment which was judgments, देखिए मुझे जो सिखाया गया कि judgments आप अगर convinced हैं कि this is what I have to do in this case, बिल्कुल, do it and forget whatever you have done. your lordship, very correct. It is nothing but an opinion of the judge. हाँ, And opinion may differ from person to person. तो क्या फर्क पड़ता है अगर हमारे ओपिनियन से आप डिफर कर गए? अभी ठीक जस्टिस है। कॉल आए हुए थे तो he was telling this only. हाँ, He was telling कि This has justice, what is the judgment? It is an opinion of a judge. I have read in some of the judgments also. Yes. Even Honorable Otherwise Justice it- Nariman's judgment I have read. Yes. This is the view taken by his And lordship. he also reiterated that day कि there is all chance that we may also commit fault. Mr. Sanjay, I give you my own experience, that little experience which I have. There was one writ application in which the decision in respect of a panchayat election was challenged. यही दानापुर का मैटर था, एंड दी मुंसिफ का ट्राइब्यूनल होता है ना पंचायत इलेक्शन का जो, तो मुंसिफ हैड पास्ड एन ऑर्डर दैट वाज चैलेंज, मिस्टर मंगलम वाज अपीयरिंग इन दैट केस, तो आई हैड पार्टली अलाउड दैट रिट एप्लीकेशन एंड पार्टली डिसमिस्ड. दैट मैटर वेंट टू डिवीजन बेंच, एंड द डिवीजन बेंच, आपको मैं बता रहा हूं कि द देन ऑनरेबल द चीफ जस्टिस प्रिजाइडिंग ओवर द डिवीजन बेंच, he was of the view that no, this munsif has done a very daring act and
Who is he? He has passed the order here. My judgment was set aside. Munsif's order was set aside. Then matter went to the Honorable Supreme Court. The Honorable Supreme Court set aside the judgment of the division bench and restored the Single. जजमेंट ऑफ द मुंसिफ। तो एक दिन मैंने उनको कहा, वैसे ही बात चल रही थी कुछ डिस्कशंस, तो मैंने कहा कि माय लॉर्ड आई वाज पार्टली रॉन्ग एंड योर लॉर्डशिप्स वर टोटली रॉन्ग। तो दिस हैपेंस, That's correct. वी आर नॉट पंडित्स कि हाँ कुछ भी Yeah. जो बोल दिया वही। No, these are all based ठीक on है, our these are opinion. subject to discussions. Law is developing every day. Yes, yes, New thoughts, new arena of no doubt. लॉज आर कमिंग, तो इसलिए वो सब दिमाग में रखने की बात ही नहीं। नहीं, बिल्कुल सही। लिखिए, पार्टी आपने नहीं बनाया इन्फॉर्मेंट, यू हैव नॉट एडेड द इन्फॉर्मेंट। Informant. We'll add it. Let the informant be added as respond number 5 in course of the day. Next, Mr. S.D. Sanjay, learned senior counsel for the petitioner, has placed before this court the first information report as well as the interim award passed by the learned sole arbitrator in arbitration case number 4. Full stop. It is submitted that the dispute is between the two brothers over the properties of Mr. Shiv Bhagwan Mohan Lal Hardware, which is a registered firm. यही है ना? Full stop. It is submitted that on a bare reading of the order passed by the learned sole arbitrator, it will appear that the parties are litigating on this issue in the civil court as well. Full stop. His submission is that a pure civil dispute is being given color of a criminal proceeding. Full stop. Judgment बोलिए। Bhajan Lal, many judgments. And senior counsel has relied upon, एक तो भजन लाल है और एक गोस्वामी वाला जजमेंट है, Indra Mohan Goswami. इंदर मोहन गोस्वामी 2007-12 SCC पेज 1। Ram Biren भजन लाल Devi भी है। दीजिए ठीक, ये 92 दो। ये यार 93 SCC वॉल्यूम 1 पेज 335। चेक कर लीजिएगा जरा। ऐसे ये यार 1992 सुप्रीम कोर्ट 604 भी है। नोट कर लीजिए। भजन लाल AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट 604। Yes, further sealed the order dated, क्या है इसका? Two orders, my lord, I have sailed. My lord, one is at page 15, that is issuance of warrant of arrest without 41A. Date of order? My lord, 14/6/2022. He has sealed the order dated 14/6/2022 As also, my lord, within bracket annexure 6, and and the order dated 4/7/2022 4/7/2022. ये passed by
In IA, Lordship, the only one order has been challenged. Learned Chief Judicial Magistrate, Bhagalpur, by filing हाँ एक ही आपने चैलेंज किया पैरा 8 में वीडियो हमने कहा है ना, नहीं, बट यू हैव consequential है चैलेंज वन ये, ऑर्डर. issuance of warrant is consequential. नहीं, specific If देना your lordship पड़ेगा. will see, He has also challenged the order dated 4/7/2022. वो factually गलत हो जाएगा ना. If I say that you have challenged both the order by filing IA, that will be factually incorrect. Lord, I have challenged the FIR itself, my lord. So That is take- correct. वो आप relief के लिए prayer अगर अलग से कर रहे हैं, ये that is one हुआ thing. है ना, पैरा 8 में हमारा जो प्रेयर है देखा जाए इसमें, पैरा 8 of my IA, page 6, for declaring the action of police obtaining non-valuable warrant of arrest against the petitioner without issuing notice under 41E. So foundation of facts are there, Mr. Sanjay, but you have not made a specific No, prayer. this is my lord prayer, my lord. Following amendments I am seeking for declaration. Prayer में पैराग्राफ 1 में हमने अमेंडमेंट सीख किया आईए से, जिसमें कि हमने ये प्रेयर ऐड करने के लिए बोला है, फॉर डिक्लेयरिंग द एक्शन ऑफ द पुलिस ऑब्टेनिंग नॉन अवेलेबल वारंट. हाँ ठीक है, दिस इज, वो थोड़ा स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है लिखा हुआ, बट है. हाँ जी बिल्कुल. चैलेंज दे, क्या लिखा है? He will also challenge the order dated 4/7/2022. ऊपर में लिखिएगा, he has challenged the order issuing non-bailable warrant of arrest as well as the proclamation issued under section 82 CRPC against the petitioners on the grounds inter alia that the learned magistrate would not appreciate the mandatory requirements of section 82 CRPC and without recording the regions in tune with the requirements as envisaged